working on your slides of your own, right? Making couple of slides every day, showing it to me so that I can give you lot of activities and icebreakers. Okay. Don't take any activities or icebreakers simply from net because I want my students to stand apart. If you're going to make slides from internet or if you're going to take activities from internet, then you are not my students. Then why should people pay you a hefty amount just because you have taken everything from internet and delivering on stage? Okay. A good trainer always develop the module, activities, stories, either from sources which are not common or from their own lives. Now, for example, you remember its story, Rat One. If you don't remember, I'm going to repeat. There was an island somewhere in South America, and one day people realized that the entire island was infested with rats. They would come on the fishing boat, get into the island, and eat all the coconuts. Now, coconuts were the bread and butter of the localites over there. So, how do you get rats off the island? So, what they decided, they took a huge drum, buried under the earth, hinge a lid, and use coconuts as baits. The smelling of fishing those coconuts, all the rats would come and fall into the drum. And within few days, you have trapped all the rats. Now, what do you do with that drum? Do you set it on fire? No. Do you throw it into the ocean? No. You just leave it. And within few days, all the rats would get hungry and start eating each other. Okay? Until the last two rats are left, the two main survivors. Now, what do you do with those two rats? Do you poison them? No. Do you kill them? No. You just release them into the island now. Why? Because now they do not eat coconuts, they eat rats. You have changed their nature. And this is what human is. You become the same person or you become, with whomever you are in your society, in your social circle or. Now, how will you, this is my story taken from one of the Hollywood movies, okay, which is not commonly found in India. So how would you change the entire story? Any ideas? ये आइलैंड का घर बना लो, घर में भी चूहे होते, you trap them. there is an old story related to a lion cub being raised amongst a set of, I think, wolves. That lion cub started behaving like wolves only, and then after that, like after a particular point of time, when the cub was made to look into the look towards the reflection of itself, then he or she could realize that he was a cub and not the wolf. वो वैसे ही बन गया था wolf के जैसा ही. But it is not But, that. but what exactly is the story? Because there is an art of being a storyteller. The Yes, that's what I said. intonation, expression, Exactly. enunciation. Uh, Okay. Now, your work is that you will keep a bank of short motivational stories, inspirational stories, fables. Okay. You should have at least 15 to 20 to start with. अब आप कहाँ से लोगे? You must be wondering where to get. Okay. We say old is gold. Take it from Panchtantra की कहानियां. Today's generation have not seen that TV serial we have seen in 80s and 90s, Panchtantra की कहानियां, दादा mm, दादी की कहानियां, etc., etc. Okay, and then you can watch some movies of other languages dubbed in English. Okay, maybe a French movie or a Danish movie or Europe, any European movie you would say. Okay, icebreakers we have already decided. Okay, we have already discussed from where we have to take and from where we have to change the icebreaker because ice breaking is very important. We know that 7 minute formula. Okay, अब हम आते हैं सबसे अच्छी चीज, how to infuse humor in your
training session. Okay? Golden rule. Whenever you crack a joke or you said something funny, do not laugh. You may smile a little bit, but do not laugh. Even if you want to laugh or even if you want to smile, smile from your eyes. Now, how do you smile from your eyes? Who can tell me? Just a moment. Someone is calling me. And why? Yeah. Okay. Like the other day, I was in one of the trainings and we were talking about what is the difference between personality and behavior. So I raised a question. So, what do you like in a person? A personality or behavior? Now, another rule that's not about the humor. Rule of training: never take names. If you're giving some humorous examples or some bad or negative examples, never take names. Then I said, okay, there's another rule in my class that you're not supposed to take any names. Okay, I'm also not supposed to take any of them. I said, maybe you like a Bollywood hero. Maybe he's accused of killing some animals in Jodhpur. Maybe he's accused of running over his SUV on people sleeping on the footpath. So people got what I wanted to say, but I did not take the name. And then I said, no names. Now that's how you smile. When you tilt your head to the left or to the right, and when you look at the audience with a cunning smile, that's how you smile from your eyes. Okay. So please write down the rule. Rule number one: never laugh. Because none of the great comedians laugh on their own jokes. So never laugh all by yourself. Number second, smile from the eyes. Okay. Number third, never take any names. And fourth, if you do not have a natural sense of humor like me, okay, you can watch stand-up comedies not from India, maybe from other countries to get an idea. Because यहाँ पे people watch all those stand-up comedies and all. जैसे हम भी कॉर्पोरेट में करते हैं फॉर स्टैंड अप कॉमेडी फॉर गुड 4-5 minutes 10 minutes, तो वो सब देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं. So watch these stand-up comedies of other countries. You get a lot of ideas. By the way, a question in between: how do you develop a sense of humor? It's like natural, or there is a course somewhere around the world, 3 months certification program on how to develop sense of humor, a 5-day workshop on how to develop a sense of humor. ऐसा होता है क्या? From the people around. From the people around. देखो हमारी कंट्री में क्या है, unnecessarily people are spending money on the courses which does not have that much value that they show off. Now, for example, okay, okay, open up your Google and tell me NLP fee in India. Neuro linguistic programming, NLP. ऐसा लिख लो, neuro linguistic programming fee in India. Five days, 50,000 plus GST. 5 days, 64,000 plus GST. 8649 cost. 8,649 is just the basic. Okay. It has 3 steps, 3 parts. Professional fully accredited NLP practitioner diploma is 6,000. And the ultimate NLP course is 5,120. Check Udemy. 56. That is what I'm seeing, Udemy. ये पता नहीं तुम लोग कौन सा गूगल देखते, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया था. Whenever I No, ask it's Google it, I don't know which Google do you use. See, it's Udemy only.
What a 5,600? हाँ ये देखो ना 68.5 hours है और ये देखो it's 8640 the first Plus one 12,800? हाँ वो नीचे वाला है it is certification training हाँ, मैं तो that कह is रहा हूँ, that's what I'm saying. It has 12,800 3-4 levels that would come into around 50, हाँ 54 plus GST सारा करके. yes there are many levels Now people would go, oh my God, yes, I want to do NLP because NLP is going to be $30 billion industry this year. NLP is going to be $30 billion industry this year. And what we do, Manish, for example, Manish, I'm going to Mumbai, I'm going to Pune for this particular course, or I'm going to wherever, Chennai, anywhere in India. So which course? NLP. Oh, wow. Manish, so do you teach NLP? So just to, have some fun, I said, no, not at all. Why? What happened? Okay, I've paid, 30,000 to you and I have to pay 60, 70 for this NLP. Then I have to stay over there, etc., etc. I go, okay. What is the duration of the course? 6 days. Very good. So what do you think? 6 days, how many hours a day? He or she says 6 to 7 hours. Normal training hours, you would think then. Okay. So it means that you would take a training session for 6 days, 7 hours a day. And do you think that you're going to do the same thing in corporate? Means you are expecting the corporate person to take out his entire staff for all 6 days, shutting all the operations and administration, sitting there for NLP. What do you expect from a college? Okay, to pull out their faculty members for good 5-6 days for 6 to 7 hours a day, and then declaring holidays of the students. Okay, this is tried and tested. अभी 24-25 साल लग गया है मेरे को कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अभी 1 तारीख को ठीक है दिस इज ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड when I conduct NLP my clients do not give me more than 4 to 5 hours because NLP it's not a bad thing you can go for it if you want because this is your own money I am not sponsoring okay this you can pay it off I won't mind but फायदा क्या है उसका because when you go to a college an MB college a BTech college or maybe a corporate वो पहले 2 दिन में जैसे आप उनको सिखाओगे ना सेरिब्रम सेरिबेलम डोपामाइन दिस एंड दिस अगले दिन क्लास में कोई नहीं आने वाला आप उनको एक बेसिक चीज बताओ बस बेसिक चीज सीखने के लिए एक ही दिन बहुत चाहिए होता है 5 to 6 hours दैट्स इट जो आपके एमओटी में है सो व्हाई टू गो फॉर ऑल दीज ट्रेनिंग तो पहले तो इस चीज को समझो आपकी जो भी आपका आइस ब्रेकर है बिकॉज आइस ब्रेकर्स एंड एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन 3 पार्ट्स जो आपका टीएनए होता है द एज ग्रुप रीजन एंड बैकग्राउंड okay ma'am we are doing this we are participating in such workshop for the very first time okay cool ma'am we have conducted so many sessions earlier but students were not happy so there's a lot of pressure on you to deliver the best okay and it is always the cultural communication and diversification you go to south you have to give a lot of examples of South Indians same goes for North Indians east and west and we should acknowledge that we should acquire that general knowledge okay तो पहले तो इंडस्ट्री को समझो और स्टैंड अप कॉमेडी बाहर की देखनी है हमारे यहाँ की नहीं देखनी है okay third always remember one thing that there is a very thin line between making the things funny and witty there is a very thin line between making the things funny and witty now I'm not going to tell you the name of my client somewhere in UP okay UP East ठीक है हमारे रंजीता मैडम क्या पड़ोसी तो वहां पे जब मैं ट्रेनिंग देने गया 2-3 बार तो एक ही फीडबैक आया क्या हंसी मजाक चलता रहता है क्या हंसी मजाक चलता रहता है क्या हंसी मजाक चलता रहता है विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी आपने खान सर को सुना है बुड़बक साले अबे गधे उनको तो बड़ा लाइक करते हैं मैं करूं वो क्या कहते हैं मेरा कुत्ता कुत्ता टोटा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता हाँ साडा कुत्ता कुत्ता टोटा कुत्ता टॉमी
और बाकी देखिए टीचर्स किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ऑनलाइन, तो वो उनका नेचुरल है, तो मेरा हैप्पीनेस नेचुरल है ना। सो ऑलवेज फॉलो योर नेचुरल स्टाइल। इफ यू डू नॉट हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ज्यादा वो रावण बनने की जरूरत भी नहीं है, हा 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 हा, ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता था। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वहां जाके अपने गंदे गंदे दांत दिखाओ। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है जाके स्माइल फ्रॉम योर आईज, एक अच्छा सरकास्टिक, ये ना, वो भी कमेंट जो है वो कॉमेडी हो सकती है। Like for that ways, I don't like him as an actor, but I do like him as, a speaker. शाहरुख खान, वो खुद नहीं हंसता, वो sarcasm ऐसा मारता लोग हंसते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट। तो ये विटी और इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट इज नो नीड टू क्रैक सम हार्ड जोक्स, सिंपल जोक्स आर ओके। No need to crack some hard jokes. Simple jokes are okay. अब जोक्स में कुछ वो मत ले आना, रिलीजन या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, सिंपल। ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। We think that training is an easy job, but when something is set out of proportion, बस गए काम से। जैसे ठीक है, स्कूल में मैंने एक दिन कहा था ना कि ये उन लोगों को, बच्चे लोग जनरली क्वेश्चन सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। दे नो द आंसर्स बट दे डू नॉट नो द क्वेश्चन। सो आई टोल्ड देम देयर इज अ पॉलिटिकल लीडर हु इन हिज स्पीच हैड सेड that he had asked the prime minister to give the question to the answer that he was having in hand. वो राहुल गांधी है ना, सब लोग तो जानते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि हम, मुझे इस जवाब का सवाल चाहिए, इस जवाब का सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब को तो देना पड़ेगा। एक्चुअली पता है क्या है, इसमें राहुल गांधी का भी कसूर नहीं है। लाइक हिज फादर, ही नेवर वांटेड टू कम टू पॉलिटिक्स। राजीव गांधी केम बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी's demise. He is an interesting person. I वो like अपनी such people उड़ाता actually. है। Rahul Gandhi, KRK, Kamal Rashid Khan, and all these people. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनको कैसे क्रिटिसाइज करते, क्या बोला, स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट। He is I very like funny. such, I like such people. वो धिनचक पूजा आती थी एक, I like such people. हाँ, वो उसका पार्लियामेंट में कभी वो सुन लो आप स्पीच, एकदम हंसते हंसते पेट फूल जाता है। चलो, let's have an icebreaker. Indu, tell us a joke. अब इंदु कहेगी मेरे को तो तेलुगु में आता है। इंदु, tell us a joke. याद ही नहीं आता, ऐसा कुछ कोई बोल देता है ना सर अचानक से, टेलर जोक क्लिक नहीं होता है। तभी तभी कह रहा हूं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज हैव अ गुड बैंक ऑफ सिंपल जोक्स। ऑलवेज हैव अ गुड बैंक ऑफ सिंपल जोक्स। लाइक देयर इज अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम दिस महाराष्ट्र, क्या राणे है वो भी बहुत बढ़िया, मतलब ही नेवर स्माइल्स बट जबरदस्त वो पोएटिक उसमें वो बात करता है। राजेनी अखा, द सेम पर्सन सेड करोना गो गो गो, करोना गो गो गो। आज राहुल गांधी का बर्थडे, आज बर्थडे आज, वही ना। शायद, पता नहीं, पहले याद नहीं कांग्रेस चाहती थी मैं उनकी तरफ जाऊं, फिर मैंने देखा हवा हाँ, बीजेपी की हाँ, तरफ है, फिर मैं उनकी हाँ, तरफ, मैं तुम्हारे पास वही। क्यों आऊं, मैं उनकी तरफ चला गया। इज अ नाइस इंटरेस्टिंग पर्सन। हाँ, वो एकदम एकदम, मतलब उसके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं होती है पर उसकी बातें बड़ी मजेदार हाँ, होती है। तो वो यही होता है पार्लियामेंट। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, यू डोंट हैव टू लाफ ऑन योर ओन जोक्स। ठीक है, ऑलवेज हैव सिंपल जोक्स। लाइक आई यूज्ड टू हैव दिस इन अ चाइल्डहुड। Once aeroplane and rocket were in a conversation. So aeroplane asked the rocket, what's the secret of your, such a high speed? So rocket said angrily, have you ever been set on fire? है ना, कभी तेरे पीछे किसी ने आग लगाई है? ओके, सो ऐसे सिंपल से जोक जो ना ज्यादा फनी हो ना ज्यादा अठावले, हो। रामदास अठावले। रामदास अठावले, हाँ। तो ना ही वो ज्यादा गंदा लगे,
ठीक है, सुनने में भी अच्छा लगे और लोग आके जाके उसको शेयर भी कर पाए। ओके। हाँ, अगर आपका सारा लड़कियों का बैच है और आप एक फीमेल ट्रेनर हो तो आप बोल सकते हो। वैसे मेरे को नहीं लगता आजकल लोगों में इतनी ईगो होती, मुझे तो नहीं मिलती। मैं तो लड़कियों के बैच में जाके बोल देता हूँ। मैं सुनाता हूँ इंटरनेशनल जोक। दो औरतें कमरे में चुपचाप बैठी थी। Two ladies were sitting quietly in a room, Indu. She did not find it. She herself is saying not possible. That's the spirit. ठीक है, तो कुछ एक दो लड़कियां होती है ना ईगो वाली, आजकल तो लड़के भी नहीं बैठते। मैं तो लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तू करना है लड़कों की बात। मैंने कब मना किया? ये थोड़ा ये भी सेंस हो गया, वो भी हंसते ये भी हंसते। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, तो एक जोक्स का अपना वो बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऑलवेज टॉक टू फनी पीपल लाइक मी। ऑलवेज टॉक टू फनी पीपल। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई निकाल ही लेता है। और कुछ फनी चीजें तो हम घर पे भी रोज करते हैं ना। लाइक यू एंटर होम, मम्मी वुड आस्क, आ गई? ये कैसा जोक है? ये कैसा सवाल है ना? कोई फिसल गया, somebody slipped, वो फिसल गया। somebody with a plaster, वो प्लास्टर लग गया। And the worst part is when you are sleeping and someone would come and ask, sorry ये जाग रही है, are you sleeping or awake? उसको भी छोड़ो, व्हाट्सएप पे रात को 1:30 बजे मेरे को कोई ना कोई मैसेज करता है, सर सो रहे हो जाग रहे हो? मैं व्हाट्सएप पे बहुत गहरी नींद में हूं। कमाल है। ठीक है, तो ये है। और कौन सा पॉइंट्स होना चाहिए? आई थिंक दीज आर द ओनली पॉइंट। हाँ, बस ज्यादा फनी करने के इतना बहुत जरूरी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपने बेसिक अपने करने जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे। ओके, नाउ and if people do not laugh on your jokes, don't feel embarrassed, because India falls very low in terms of happiness quotient. I also lose on lot of admissions, MOT. People talk to me for the first time. ये तो ऐसे लग रहा है बात करने में, जोड़ो। You talk to people like this. Hi, yes, Manish Sharma, director, हमारे training service. You are trained, yes. You'll get admission. अच्छा, पैकेज बाहर का कुछ हो, अंदर कुछ ना मिले। ठीक है, so if people don't laugh, it's okay. नहीं, क्लास में तो मैं ये कह देती हूँ मजा नहीं आया, तो मैं कहती हूँ कि भाई जैसा क्राउड वैसा ही लेवल का जोक। हाँ, जैसी जनता वैसी पुलिस। तो फिर उस बात पे जरूर हंसी आ जाती है उनको। तो बेइज्जती बेइज्जती की नहीं, ना। वो लेकिन क्लासरूम की बात अलग होती है। व्हेन इफ लाइक अगर टीचर्स का क्राउड होगा या ट्रेनर्स रहेंगे तो मे बी लाइक देयर ईगो में गेट हर्ट। ईगो एक ऐसी चीज है, कुछ नहीं पता कब कहाँ किसकी हर्ट हो जाए। मेन चीज क्या होती है, एक तो बच्चों के बीच में आप डेली जा रहे होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज देयर। एंड व्हेन यू आर लाइक मीटिंग अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी आप नेक्स्ट टाइम नहीं मिलने वाले हो, तो हाँ, आपको डेली का अलग है। ठीक है। हाँ वहां मुश्किल है। फिर वहां ऐसा बोलने से तो बोलेंगे इस बदतमीज औरत है। No, but it depends. When I go to corporate, within the first 7 minutes of ice breaking, I always tell them, I'm the trainer, you're my student, let's behave like friends. So keep your capacity or designation outside. मैं भी अपना ट्रेनर बाहर छोड़ के आता हूँ, let's talk. तो वो हो जाता है आराम से। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इन्फ्यूजन हमने घूम दिया। ठीक है, अब जो हमने कल से स्टार्ट करना है NLP, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि व्हाट ऑल कोर्सेज यू आर गोइंग टू लॉन्च once, or what all topics you are going to teach once you become a trainer. ठीक है, देखो, अब आप दो तरह के कोर्सेज लॉन्च करेंगे। नंबर 1, मेकिंग ऑफ ट्रेनर, दो इट्स माय पेटेंट बट यू कैन टेक इट, नॉट एन इशू। मेकिंग ऑफ ट्रेनर, and common is train the trainer. Making of trainer and common is train the trainer. Now understand the difference between these two. Making of trainer goes for 3 to 4 months. Train the trainer, वो मार्केट वाला है, 5 दिन के 50,000 रुपए दो और ट्रेनर बन जाओ। एक हफ्ते में 40,000 दो, ट्रेनर बन जाओ। एक हमारे सेलिब्रिटी ट्रेनर है डैश खान करके, वो 1.5 महीने का 2.5 लाख रुपए लेते हैं।
ट्रेनर बन जाओ, सेलिब्रिटी ट्रेनर बनो। मतलब खुद सोचो, इंदु, रंजीत और मनीष गए सेलिब्रिटी ट्रेनर बनने, वापस आके शाहरुख खान को फोन करोगे, हाय आई वुड लाइक टू बी योर लाइफ कोच, कुछ भी। एंड पीपल गो लाइक दिस, चले जाते लोग उठ के। पहले मार्केट पूरा किसी के पास ट्रेन द ट्रेनर कोर्स करने के लिए, मेकिंग ऑफ ट्रेनर कोर्स करने के लिए, यू बेटर टॉक टू द टीचर, नॉट टू द रिसेप्शनिस्ट और नॉट टू द एग्जीक्यूटिव्स। हु इज गोइंग टू ट्रेन यू? जिसने ट्रेन करना है उससे तो बात करो, है ना? तो मेकिंग ऑफ ट्रेनर, just मेकिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम इज बेसिकली फॉर दोज हु आर वेरी raw or new to this particular industry, those who do not understand training कैसे चलता है, ये करना है, client handling कैसे करनी है, how to set up, ये उनके लिए है। कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, grammatical errors बहुत सारे हो रहे हैं। तो corporate training and motivational training is something different. You don't require any language for become a motivational speaker. You can speak in Telugu, Hindi, English, whatever your local language is. Okay, but for corporate training, English works. For government officials, Hindi English mix. Okay, for college and for college and private corporate, yes, English goes by 80. English to Hindi ratio is 85 to 15. Okay. For government Okay. officials, I've seen that if they This is start. an urgent call. Will take a break for a minute. Okay. Till the time you can discuss these icebreakers.